General classification of the autoimmunity. As the autoimmune diseases that are considered as a disease condition, that is a pathological condition in which there is a damage of the self tissues, by which there is the breakdown of the self tolerance mechanism or self immunological unresponsiveness mechanism. So, if we can look at the autoimmunity, so the classification of the autoimmunity is based on the tissues or the organs which are involved. Because autoimmunity, particularly, that is the generation of the immune response against the self tissues, और बिकॉज अगर हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो बॉडी में एक सिस्टम है और एक सिस्टम में ऑर्गन्स हैं और ऑर्गन्स दे आर मेड अप ऑफ टिश्यूज और वो टिश्यूज जो हैं दोज आर मेड अप ऑफ सेल्स. तो इसका मतलब है कि जो ऑर्गन्स हैं और जो टिश्यूज हैं एंड पर्टिकुलरली जो फाइनली वो जो सेल हैं जो कि उस टिश्यू और ऑर्गन को बना रहे हैं, दोज आर बीइंग इन्वॉल्व. So on the basis of, you can say that the organs or the tissues or the cells which are involved in such kind of autoimmune response, that's why we can classify the autoimmunity. So generally speaking, we can say that there are following two categories of the autoimmunity is being there. The first one is the organ specific autoimmunity and the second one is non-organ specific autoimmunity. As the name suggests that there is an involvement of the organs, that's why it is called as organ specific or non-organ specific autoimmunity. So the organ specific autoimmunity, that means that at a name suggests that ऐसी autoimmunity means ऐसे mechanisms जिसमें सेल्फ टॉलरेंस जो है वो ब्रीच हुई है अगेंस्ट दी वेरियस ऑर्गन्स. मींस जो ऑर्गन्स एसोसिएटेड स्पेसिफिक जो एंटीजेंस हैं, जो सेल्फ एंटीजेंस हैं, उनके अगेंस्ट जो सेल्फ टॉलरेंस का मैकेनिज्म ब्रीच हुआ है और इम्यूनोलॉजिकल अनरिस्पॉन्सिवनेस इज नो मोर देयर, दैट्स व्हाई एन ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स वुड बी जनरेटेड. तो इसका मतलब है कि इस टाइप और इस कैटेगरी ऑफ ऑटोइम्यूनिटी में जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो पर्टिकुलरली ऑर्गन एसोसिएटेड स्पेसिफिक एंटीजेंस जो हैं उनके अगेंस्ट जनरेट होगा. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज ऑर्गन स्पेसिफिक ऑटोइम्यूनिटी. Okay, so the antibodies against the organ associated antigens damage the organs. Now, how this mechanism of the damaging, because we have already discussed, that means that the immune response generation, जो immune response generation में जब एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज डेवलप होती हैं तो what happen, वो एंटीबॉडीज दोज आर स्पेसिफिक टू दो स्पेसिफिक एंटीजन. तो एंटीजेंस और एंटीबॉडीज का जब रिएक्शन होगा तो इम्यून कॉम्प्लेक्स बनेगा और whenever the immune complex would be there, so it would allow the deposition or fixation of complement proteins, or whenever the complement proteins it would be fixed or deposited on that tissue जहाँ पे ये immune complex बना है. तो as a result complement proteins they would be activated because उस कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन प्रोसेस की वजह से जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स बनेंगी दोज वुड कॉजेज द डैमेज टू द सेल्फ टिश्यू. और जब सेल्फ टिश्यू डैमेज होगा तो अल्टीमेटली यू कैन से दैट इट वुड बी अ पैथोलॉजिकल और डिजीज फॉर्म. So this is a one form that by which the humoral component like antibodies and the complement proteins they are being involved in damaging the self tissue. Another important mechanism is that is the cell mediated immune response, के मीन्स उस सेल उस टिश्यू जो कि सेल्फ टिश्यू है उसकी एंटीजेंस के अगेंस्ट जो कि दोज आर गोइंग टू प्रेजेंटेड टू दी ऑटो रिएक्टिव टी सेल्स, जो कि टी सेल्स को अगर वो टी सेल्स उनके अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट कर दें तो डैट मीन्स कि वो उसकी साइटोटॉक्सिसिटी करेंगे और उस टिश्यू को डैमेज करेंगे. दैट्स व्हाई इट वुड बी कंसिडर्ड एज एन डैमेजिंग कंडीशन. ओके, so there are various target organs inside the body which has the potential to develop the autoimmunity. For example, the skin, the thyroid gland, जो कि neck में you can see that there are certain endocrine glands are being there which are very important in the body metabolism. That's why those also have a tendency to develop the autoimmunity. The next one is the muscles. The muscles are present everywhere inside the body जो कि बॉडी की मूवमेंट में हेल्प आउट करते हैं एंड दैट्स व्हाई उनके अगेंस्ट अगर ऑटो इम्यूनिटी होगी दैट मीन्स दैट इट वुड डैमेजिंग द मसल्स. सो हियर इन दिस
table, you can look at the organ specific autoimmunity. That means that the various diseases are being there, then the organ involved, and the second one is antibody टू मीन्स के उस ऑर्गन में कौन सी एंटीजन है जिसके अगेंस्ट एंटीबॉडी डेवलप होगी. सो द फर्स्ट वन यू कैन सी दैट हियर द होशिमोतो थायरोइडाइटिस. दैट मीन्स दैट इट इज अगेंस्ट द थायराइड के जो थायराइड ग्लैंड है उसके अगेंस्ट ये डिजीज है. और इसमें थायरोग्लोबुलिन जो प्रोटीन्स है थायराइड में प्रेजेंट होती हैं, थायराइड पेरोक्सीडेज एक एंजाइम है, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज डेवलप होती हैं जो कि उसको डैमेज करती हैं. द सेकेंड वन इज प्राइमरी मिक्सोडिमा. ये भी थायराइड की एक डिजीज़ है और इन ऑटोइम्यून डिजीज़. इसमें साइटोप्लाज्मिक टीएसएच जो कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है उसके रिसेप्टर्स के अगेंस्ट एंटीबॉडी डेवलप होती हैं और वो उसको डैमेज करती हैं. द थर्ड वन इज ऑल हिमोलिटिक एनीमिया. हिमोलिटिक एनीमिया जो कि रेड ब्लड सेल्स, जो ब्लड के अंदर जो सेल्स हैं आरबीसीज, उनके अगेंस्ट जो एंटीजेंस हैं, आरबीसीज की जो एंटीजेंस हैं उनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज डेवलप होंगी. तो क्या होगा, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनेगा और कॉम्प्लीमेंट डेपोजिशन होगी तो आरबीसीज की हिमोलिसिस होगी. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज हिमोलिटिक अनीमिया. And the next one is the good passer syndrome. That is a syndrome in which the kidney and the lungs are the target organs. And particularly the kidney and the lung जो उसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन हैं उनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज डेवलप होती हैं और वो जो उनकी जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है उनको डैमेज करती हैं और एज अ रिजल्ट ऑफ दैट डैमेज वो टिश्यू और लंग जो है वो डैमेज हो जाएगा. एंड द लास्ट वन इज़ द अल्सरेटिव कोलाइटिस जो कि हमारे जीआईटी में जो लार्ज इंटेस्टाइन है डेट इज़ द कोलन, उसमें एक एंटीजेंस हैं डेट आर द कोलन लिपोपोलीसेक्राइड्स और उन कोलन लिपोपोलीसेक्राइड्स के अगेंस्ट एंटीबॉडीज डेवलप होंगी और वो एंटीबॉडीज उन एंटीजेंस के साथ जाके बाइंड करेंगी और एज अ रिजल्ट इम्यून रिस्पॉन्स वुड बी जनरेटेड और वो डिजीज कॉज करेंगी डेट वुड बी कॉल्ड एज अल्सरेटिव कोलाइटिस. Okay, the next is the non-organ specific autoimmunity. That is opposite of the organ specific autoimmunity. That means the immune response not against organ associated self antigens. Means के organs के associated antigens के against जो है immune response generate नहीं होगा. That means कि वो can be systematic, कि जो body में various antigens हैं सभी के against जो can say immune response can generate. दैट्स वाई इट इज़ नॉन ऑर्गन कि एक पर्टिकुलर ऑर्गन, जैसे हमने प्रीवियसली बात की ऑर्गन स्पेसिफिक, अगर थायराइड की डिजीज़ है तो थायराइड के जो एंटीजन है उन्हीं के अगेंस्ट जो है इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होगा. अगर स्किन की है तो स्किन की जो एंटीजन हैं उन्हीं के अगेंस्ट. जब स्किन की अगेंस्ट होगी तो थायराइड के अगेंस्ट देयर इज एन पॉसिबिलिटी देयर वुड नॉट बी एनी ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स बी देयर. बट इन दिस केस दैट इज नॉट ऑर्गन स्पेसिफिक, तो इसमें मल्टीपल ऑर्गन्स दे कैन बी इन्वॉल्व. सो the antibody is against not organ associated antigen. Organ associated antigens के against you can say that antibodies develop नहीं होंगी. So those can be called as systemic autoimmune diseases. ये systemic all over the body किसी भी organs या किसी भी tissue या किसी भी cells को वो antibodies या immune response जो है वो generate हो सकता है, क्योंकि that is more severe form जिसमें जो immunological unresponsiveness और tolerance है वो ब्रेक हुआ है इस तरह के बॉडी में किसी भी जगह ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स और ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट किया जाए. ओके, सो द मेनली टारगेट ऑर्गन्स इसमें मल्टीपल ऑर्गन्स क्योंकि इन्वॉल्व हैं, लाइक स्किन है, जॉइंट्स हैं, सॉफ्ट टिश्यूज, देयर आर सो मेनी एक्सेट्रा, दे आर बीइंग इन्वॉल्व. इट्स नॉट नेसेसरी कि एवरी टाइम ओनली वन स्पेसिफिक organ is being involved, like in organ specific autoimmunity. So that's why it is non-organ specific autoimmunity. So here in this table you can see that in the disease the first one is very common, that is the rheumatoid arthritis. So rheumatoid arthritis, that means that it involves the various joints of the body, जिसमें joints involved हैं particularly, लेकिन joints के साथ साथ skin और kidney they are also be involved. तो इसका मतलब है कि हाउ दे कैन डेवलप द रूमेटॉइड आर्थराइटिस कि जॉइंट्स में हो सकती है, जॉइंट्स के अलावा स्किन और किडनी में भी होगी. तो पर्टिकुलरली जो एंटीबॉडी डेवलप हो रही है इन केस ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस वो जॉइंट्स की टिश्यूज के अगेंस्ट नहीं, बेसिकली इट इज़ अगेंस्ट द आईजीजी, जो कि बॉडी में आईजीजी है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी डेवलप हो रही है और वो आईजीजी को डैमेज कर रही.
और जब आईजीजी के साथ वो रिएक्ट करती है तो वो एक कॉम्प्लेक्स बनता है, और वो जो कॉम्प्लेक्स है वो जॉइंट्स और स्किन और किडनी में जाके डिपॉजिट होगा, and as a result of that deposition the complement fixation would be there, and as a result you can say that damage of all those tissues, all those organs जहां जहां वो immune complex deposit हो रहा है systematically, क्योंकि IgG blood में है, serum में है, so that means that it has an ability to deposit everywhere inside the body. That's why it is called as systemic autoimmune disease or non-organ specific autoimmune disease. The next one is systemic lupus erythematosus, that is SLE, or इसमें भी skin and joints they are being involved, and in this the particularly the antibodies are against RNA, DNA और nucleoprotein, क्योंकि as you know that body में जितने भी organs हैं और जितने भी टिश्यूज हैं दे आर मेड अप ऑफ सेल्स, और सेल्स में न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लियस है, और जो दीज एंटीबॉडीज आर स्पेसिफिक अगेंस्ट द न्यूक्लियस और न्यूक्लियर प्रोटीन, और यू कैन से दैट द डीएनए और आरएनए। जब डीएनए और आरएनए के अगेंस्ट होगी तो दैट मीन दैट देयर इज नो स्पेसिफिसिटी इज बीइंग देयर। सो डीएनए और आरएनए पूरी बॉडी में जहाँ जहाँ सेल्स हैं वहाँ प्रेजेंट हैं, तो उसके अगेंस्ट दे कैन produce damage, and as a result a systemic autoimmune disorder would be there, that is very common, that is the SLE. The third one is a Soren syndrome, and in this case of there is an moisture producing gland, जो moisture producing gland है body में उसके against develop होती है, there are everywhere, you can say that body में skin में moisture producing glands, हर organ में skin में you can say that there are being there. So उनकी basement membrane के against you can say that antibodies they are going to develop, and that's why this is the systemic form of autoimmunity. The next is scleroderma. Scleroderma means that is an autoimmune disease in which there is the skin, blood vessels, muscles or internal organs they are going to be involved. There are multiple organs they are involved, and as a result इसमें भी जो target है जिसके against antibodies develop होनी है वो DNA है, RNA है और nuclear protein है. So you can say that ये DNA, RNA, nuclear protein they are present everywhere inside the body, so that's why it can be systemic in nature. Then the sarcoidosis, that means that the lungs, skin and ear or nervous system they are being involved in such kind of diseases. Heart is being there, heart tissue it also being involved in this, and the autoreactive T cells particularly. So इस case में जो autoreactive T cells हैं वो उनके you can say that they are going to develop. So autoreactivity would be generated by the cell mediated response. तो उस सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स की वजह से क्या होगा, एक इम्यून रिस्पॉन्स और ऑटो इम्यूनिटी डेवलप होगी, और वो जो अनरिस्पॉन्सिवनेस थी बॉडी में अगेंस्ट सेल्फ टिश्यूज जो लंग है, स्किन है, हार्ट है और नर्वस सिस्टम, वो ब्रेक हो जाएगी और अल्टीमेटली एक इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप होगा दैट वुड बी कॉल्ड एज ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स, एंड बिकॉज सच काइंड ऑफ ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स is against the multiple organs of the body, that's why it is non-organ specific autoimmunity, or you can say that systemic form of autoimmunity.